Okay, good morning, everyone. Today, being the convener of the program, I, Dr. Suman Patnaik, Principal, Haldia Institute of Pharmacy, pleased to inaugurate this program, this year first faculty development program organized by our institute, Haldia Institute of Pharmacy. A warm welcome extended to all faculty members and the resource person, come keynote speaker for this important initiative. First of all, I want to extend my thanks to our Honorable Chairman Sir, Secretary Sir, Vice Chairman Sir, and other BOG members for their continuous support and encouragement. Continuous learning and professional growth are the essential in today's educational landscape. Effective educators must remain at their at the forefront of the teaching, learning, knowledge, and emerging trends in their field, recent advancement, and the trends in multidisciplinary research also. So looking at all such aspects and needs of the faculty members and students today, we are organizing 5 day faculty development program in our institute in online. The title of the FDP is Tools and Techniques, Basic Concept, Understanding and Application of Research Methodology. This 5 day program will enrich our knowledge in various aspects of research critically designed by our organizing team, like basic concept of research, tools and techniques for systematic literature review, write, how to write the research proposal, ethical research practice, funding sources, intellectual property rights, writing research paper, and the report of research thesis. This faculty development program is designed to provide invaluable insight and practical skill about the research methodology. It will enhance teaching methodology, deepening subject matter expertise, and empower the faculty member to address the evolving needs of students as well as industry. Throughout, throughout the country, more than 130 participants registered in this program, faculty of different fields in like pharmacy, hospital management, MBA courses, they also registered in this 5 days program. I hope active participation and meaningful discussion with an open mind and collective spirit of learning and growth surely enrich our knowledge. Gratitude extended to all resource person and organizing committee for their efforts in planning and executing this program. Their dedication and hard work have been instrumental for bringing this valuable initiative to execution. There, there will be a discussion hour after every session. Please be connect with us. I hope you will all enjoy this FTP. Thank you all. Thank you to our respected principal, sir, for welcoming everybody and providing and giving us motivations to continue our session. Before starting, I would like to give a brief description about our eminent speaker, Dr. Vivekanand Kishan Jadab, sir. Sir has a doctorate in Faculty of Pharmacy from KVCN MU, Jalgaon, and is currently affiliated as professor in Department of Pharmaceutics. Sir is also head and training placement cell at HR Patel Institute of Pharmaceutical Education Research, Shirpur, Dhule, Maharashtra. Sir has actively involved in teaching and research for past 18 years, and sir is also advisory of High Tech College of Pharmacy, Chandrapur. Sir has successfully completed his tenure as a president, Association of Pharmaceutical Teachers of India, Madhya Pradesh state. Sir has guided many MPharm students as well as PhD scholars. Sir has received funds from DST, AICTE, and from many other universities. Sir has received Best Innovation Awards in 2017 at national level 2, 3 at Jalgaon and as well as at Pune, organized by GHR Labs and Research Center. So now I will hand over the session to our respected eminent speaker for continuing the session. Sir, please, you can start, sir. Thank you. Okay, thank you. First of all, I would like to thank
Principal Dr. Suman Pathak sir and your team, especially Panda sir and your team who have given opportunity to interact with the young minds of different researchers who have joined from different corner of India. Just I will share my PPT. Okay. Uh, everyone is share seen my PPT. पांडा सर सबको पीपीटी दिख रही है? नहीं सर. तो एक हेलो Yes sir. पीपीटी दिख रही है कि नहीं? नहीं सर, पीपीटी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है. सर एक काम करो ना, मुझे एज को होस्ट बना दो तभी वो शो होगी. सर हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है. जस्ट अ मिनट सर. हाँ सर प्लीज ट्राई हाँ वंस सर. मोर ना. Okay. ये सर अभी शो हो रही है? नहीं सर. सर नेट एक बार शायद स्लो होगा, माइट बी. वाइट स्क्रीन. सर वाइट स्क्रीन आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा पीपीटी शो नहीं हो रहा. अच्छा अच्छा पीपीटी शो नहीं हो रहा. एक मिनट. स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है. थोड़ा टाइम लगेगा शायद. समझ. अभी आ रहा है देखिए. हेलो लाइक भेज दो क्या आपको? ओ,
सर आपको भेज दिया, आप देख लीजिए. हाँ जी sir, we have received. Now we'll share it sir. Just a moment. Okay. Okay, shall I start? Hello. Yes sir. Hello. I say yes sir. You can हाँ start. सर, And sorry start to करें. all the participants as well as sir for the delay. It was just a technical issue. Sir, you can start now, sir. Yeah. Okay, first Thank of all, I would like to thank Dr. Suman Patnaik, sir, who have taken efforts to organize this 5 days faculty development programs on tools and techniques, basic concept, understanding and application of research methodology. And thanks for giving opportunity as a resource person for this activity. So next slide, please. The next slide. Uh, for this today's topics, sir, I have given a topic that is a basic concept on research. And in this today's presentations, I will cover the different contents. I'm not going to bore you all peoples. I will just update how to do the research and what is the research, what is the classification of research, what is the conditions should be need for the research, then why you go for research, okay, and what are the basic steps to research projects, and what are the objectives should be planned for doing any research, then characteristics of research, and which scientific methods are going to keep in your mind for doing any good qualities of research. After that, which are the qualities should be present into the researcher
it's a mistake that is research. It is research, good qualities of researchers. Then what are the criteria should be present for as a good research? And finally, that is case study. We will discuss about the case studies of that, how to start, how from how to find out the topics to completion of research and achievements. Okay. Next slide, please. Okay, and that is what is research. As you know, that research is nothing but the searching of again and again to which things it should be a newer things, find out the newer things. As you know, if you go on Google and search on any topics to know the how many research is till date it's that is done. So that is nothing but the researchings. Then after that, you will find out the what are the research is carried out and what need to do for your and find out your problems in this. So research is an endeavor to discover the answers to intellectual and practical problems through the applications in scientific methods. And as you know, the research is systematic efforts to gain a new knowledge. Ultimately, you have to find out the problems, and that problems you have to find out that solutions or answer of that problems. That is nothing but the research is there. For that purpose, it's need to systematic process to collect the informations, increase the not increase the understanding of that concept phenomena, and with respect to the particular topic of the concern is there. So that is nothing but the research is there. Okay. Next. For that purpose, you need to find out the objectives. Anything you need to do the research for that purpose should have the objectives. So purpose of the research is to find out the possible answers. Those who have find out the problems. So problem of that solutions is nothing but or the possible answers. That is nothing but the objectives. And objectives, how can you find out that objectives? You complete the objectives by systematic studies based on to the scientific procedures or doing the experimental work is there. That is nothing but the objectives. And objectives are specifically on which basis is there. Example, you can say that is discovery and discovery of new molecules or that is modify the dosage form. Nowadays, discovery of new molecules is restricted to, you can say that chemistry peoples are mostly doing on the synthesis of new drug molecules. Cognitive persons should be obtained from different source. That is nothing but the discovery of new molecules. But for the discovery of new molecules, it is the costliest process. In 10 to 15 years back, about crores rupees and near about 15 to 20 years. But now you can say that in 2025, near about 1,000 to 1,500 crore rupees. And again, the time should be required 20,000, but it is reduced due to so many simulation techniques and AI tools that comes into the research. So time will be reduced, but the cost is increases. So discovery of new molecules is very time consuming process as well as in costly process. So best options, as you know, for that is the modify the dosage form, and modification of dosage form is as you know, that is when it is required. That is the conventional drug delivery system, that is first generation, second generation, that is controlled drug delivery systems, and third generations, as you know, that is the targeted drug delivery systems. So for challenges for these drug delivery systems or development for doing the research is there in research, that is drug discovery. Okay. So the best option to find the dosage forms in so many types of polymers is available in market, and that polymers
Also, the tailor-made properties depends upon your requirement. You can modify the polymers and modify the dosage form. As per your requirement, you can target the control drug delivery system sustain release and targeted drug delivery system is possible. So leads to improve the existing therapies of any disease and disorders. It is possible through this research is there. And ensure that the safety and accuracy and quality of research should be required into the particular product is there. And ultimate objective is to minimize the side effects, which leads to improve the patient compliance and safety. Next, please. In classification of research, research are classified broadly into the three types. That is, first, that is the basic research, then applied research, and translation research. In basic research, that is specifically research is carried out onto the mechanisms and targeted, that is nothing but the on molecular levels, cellular levels, or any disease pathways should be carried out. As you know, that is the this will be find out the different mechanisms is in chemistry books and pharmacology. The particular bacteria will be mechanism, particular reasons on that basis like that. Okay. So this thing should be carried out into the to expand the scientific knowledge. The basic research is specifically carried out for purpose is to expand the scientific knowledge and to understand why we have to get into how this natural phenomena and methodologies will be carried out into that. Okay. So just a minute. Okay. So back previous slide. Okay. So how the natural phenomena and how the research or any mechanisms is will be carried out, how any drug particle should be bind with receptor and particular targets and find out the disease and reduce the bacterial infections, that which will be carried out. And that basic research which will be carried out for the ultimate objectives is to build the foundations for future applied research. And now, what do you mean by the applied research? Applied research is nothing but based on to the basic research which should be carried out. As you know, best example, you can say that first we have to carry out any research onto the M-Farm level. That is nothing but the initiation of research is there. Then that research should be carried out and transformed into the same project which should be carried out for the PhD. So that is nothing but the drug formulations or clinical testings should be carried out or modifications of research in basic research is there. This will be beneficial for the applications purpose. The objectives is to applications. Through the applied research, you can solve the specific problems. Those you have already that is plan for the plan for research, or you can say that object find out the questions or find out the topics how to that is the research will be carried out on that particular topic. That specific problems it should be carried out, which leads to improve the process, or you can say that modification of process, then modification of dosage forms, and the technology or methodologies we are going to use for the formula development of quality products. That is nothing but the applied research is there. And that research will be beneficial. Applied research will
Hello. Hello. Stop, sir. कॉल आ रहा है सर का कॉल आ रहा है आपको ही आ रहा है sir I think your mic लेक्चर मध्ये हॅलो आता आवाज आ रही सर yes sir you are audible hello so that applied research, whatever the applied research will be carried out, which will be beneficial for the decision making, policy developments, and clinical applications is there, which can be used. And that is nothing but the applied research. Another that is translational research is there. Translational research in terms of you can say that whatever the research, basic research on that basis of a foundation should be applied research will be carried out onto the different formulations should be carried out or any other research clinical testings or you can say that whatever the characterization should be carried out it will be helps to the basic decision makings or policy development or clinical application or finally product should be developed or in terms of you can say that technology transfer whatever the research should be carried out into the lab scale level it should be transformed into the that is market research that is nothing but the lab to clinic that is nothing but a translation research in that transform basic research into the clinical applications which will be speed up the development of newer drug diagnostics and therapeutics and which will be ensure that these innovations reach to the patients efficiently effectively into the societies or different peoples is there that is the ultimate objectives of translation research is there so here the classification of research from that you can everyone will be understand from basic research, applied research to translation research. Ultimate objective is whatever the research should be carried out to for the benefit of societies and the people is there. Okay. Next. Next, please. Okay, what is the need for the research is there? And it comes to the specifically it comes to the toward the topics and research projects how to find out that in that what is the research why you have to carry out the research the research is carried out for the four things is there on that basis first that is exploration describe diagnosis hypothesis inductions and deductions is there in explorations in that to discover the new area of knowledge or phenomena which is previously unknown
and everyone will be find out that whatever the research should be carried out first is everyone in keeps in mind to that is no one. I am the single persons to the research on the particular topics. No one can perform till date. Okay, but these things will be happen in that is thousand in 5 or 10 people. You can say that. But nowadays you should be research is the focus specifically. You can say that modification level is there. Okay, drug modifications, then methodology modification, excipient modifications, dosage form modifications, whatever you can be carried out is the easiest way to do the research and find out the new things is you have to modify it there. Okay, or for that purpose, that is through that modifications to develop the new products or new techniques or new methodologies or new product, that is become the unknown, you can say that uh, in that way. Okay, another that it describes and to provide a clear a detailed understandings of process behavior or conditions. In another type of research we can say that or explorations into the methodology. And nowadays you can see that any researchers has been published their research articles in that methodology is given. So you have to think about that same technique, same methods you should be applied and do the research. They have the issues of that is repeatability of reproducibility of research and doesn't get proper understanding. Okay, so in that cases you need to modify the different experimental conditions and the different temperature catalyst and that is timing conditions, stirring speed. You should be need to modify these there, and then finally you should be optimize your processes own process for your particular method is there. Another is whatever the it should be carried out the modifications or you can say that carried out into the process to diagnosis to identify the cause reasons behind the observations during the problems you have to find out and you comes to the outcome base. Okay, what is your objectives after exploration of new things modifications of different experimental conditions your final how can you solve the problems and how to find out the outcomes of your problem is there. Okay, in the diagnosis process or you can say that in characterization process. Another one that is the hypothesis. In for any research should be carried out, uh, you have to plan the problems and in that problems how can you solve it or answer it in different way. You have to create one hypothesis, and hypothesis is nothing but the tentative testable that is a statement or predictions about the relationship between the two or more variables. It formed the basic research or guiding the data collections and analysis. Ultimate, you have to find out the possibilities. You have to find out the problem is nothing but the you can say the topic of the particular research. On that for that purpose, you have to create some challenges response with respect to that topic. So you have to create the hypothesis or some you can say that solutions in front of you. You can solve the problem by this the routes or different way you have to use and you can solve it. Okay, and ultimately you should be find out one solutions or that is nothing but the hypothesis. Okay, so that hypothesis should be based on some basic research. So you can convert that basic research into the applied research and in future perspective that is your technology transfer. That is nothing but research is this. In that purpose, it should two things should be included in that in hypothesis for designing of or giving any problem to the solutions is there. That is inductions and deductions is there. Induction which will be helps to formulating or formulating the hypothesis or stronger the
your hypothetical based statement to a stronger one through the inductions and deductions, which helps that testing the hypothesis through the experimentals. That means nothing but the deduction means practice. You think about the practical approach, whether it is it should possible to that hypothesis you have planned or design, whether it is possible experimentally or not. You should be given that way, or you can say that the point, whether it is for those whatever the hypothesis you have planned, you should be get it or solve or possible to solve the answer or the questions or given the answers or not. You should be find out that. That is the thing, but the need for the research should be four things should be kept in your mind for designing and development of the any dosage form research and doing any research is this. Okay. For find out the new topics, that is exploration, describe, diagnosis, and on that basis you should be find out the hypothesis, and hypothesis you should be theoretically as well as be practically sound. Then and only you will be give the outcome for that. Okay. Next slide, please. Okay. So what are the basic steps of a research or project? Okay. These are the possible steps to conduct the good research. That is first, find out the topic, then formulate the questions, find populations, select design and measurement, gather evidence, interpret the evidence, and tell about the findings. That are the basic steps you should be involved into the research is this. Okay. The first is critical things for the newer researcher. One is there, find out the topics. That means nowadays new researchers are struggling for the topic or the research topics. Which research topics we are going to, that is conduct the research on that particular topic. How to find out the topics? The topic find is very easiest method, you can say that. But first you need to find out the problem surrounded by yourself. यानी अगर हिंदी में कहा जाए तो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम आपके पास में ही है, वो बस आपका नजरिया चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारी जगह पे आप आजू बाजू में अगर देखते जाओगे और सोसाइटी में अगर देखो कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स। आप अभी फिलहाल अगर अपने खुद के बारे में अगर सोचा जाए कि हम लोग जो है फार्मा फील्ड के हैं, and that is nothing but the healthcare field. Okay, basic broader field, that is nothing but the healthcare. So healthcare research में ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है सोसाइटी में कि उसको आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पहले वो सोसाइटी का प्रॉब्लम पहले ढूंढना पड़ेगा। सोसाइटी का प्रॉब्लम है इसका मतलब वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आप अगर अभी अगर आजू बाजू में अगर सोसाइटी में अगर देखते जाओगे तो हर एक के घर में एक प्रॉब्लम्स है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है कि हर एक के पास में अगर फैमिली में जाओगे कोई तो भी पेशेंट है कि सफरिंग फ्रॉम दैट इज डायबिटीज, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, or either that is the simple problems is there, that is nothing but the rheumatoid arthritis. That are problems or common problems for the society. ये आज के हर एक के घर में एक कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, सोसाइटी सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम्स. So how can you solve this problem for society? And that problem, society's problem is become the yours one. That it should be kept in your mind. सबसे पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा जो सोसाइटी का प्रॉब्लम जो है वो खुद का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करोगे ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। सपोज आप एक डिसाइड करो कि आपको एक कैंसर है, यानी आजकल पंजाब में तो आपको पता है जो कैंसर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पेस्टिसाइड्स है, फूड्स है, जो आप अभी खा रहे हो फूड, वो तो आप एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे हो रहा है वो आपके किचन में आ रहा है, किचन से आपके हेल्थ पेट में जा रहा है, तो आपके अल्टीमेटली सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वेरियस डिसीज एंड डिसऑर्डर्स, how the different reasons and causes is there. Okay, and that causes
You should know it. On that basis, you should be select the particular problems. अगर प्रॉब्लम चूज करना है तो पहले ब्रॉडर टॉपिक डिसाइड करो. एग्जाम्पल कि आपको कैंसर डिसाइड करो कि ये कैंसर से, और कैंसर आजकल बहुत सारे प्रकार के कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, लंग कैंसर, asthma, you can say lung cancers, tongue cancers, breast cancers. Okay, so many types of oral cancers, so many types of cancers are there. So in that, find out only one cancer. Okay, that is first you should select the products, then you should be selective. That is specifically you should become into the selected topics is there. Okay, so पहले आप सबसे पहले आपको, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉपिक कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है. अगर आपको और अगर फाइंड आउट, अगर आपको इजीएस्ट वे से चाहिए कि आपको भाई आजू बाजू में भी ढूंढना नहीं है, लेकिन आपको रिसर्च का टॉपिक चाहिए, ठीक है. तो जैसे कि डॉक्टर सुमन पटनायक सर ने, प्रिंसिपल ने बताया कि आपको आगे की जो फाइंड आउट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट एफडीपी है कि रिसर्च फंड कैसे लाना है, क्या करना है, उसके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स कैसे लिखना है, ये सब चीजें आपको बताया. अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है हर फैकल्टी का कि भाई मुझे कहीं से और रिसर्च फंड मिल जाए. तो वो रिसर्च फंड मिलने के लिए और आपको टॉपिक चाहिए, टॉपिक आजू बाजू के आपको ढूंढना नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है उसी फंडिंग एजेंसी पे वेबसाइट पे जाओ, जैसे कि डीएसटी है, आईसीएमआर है, डीएचआर है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है. आप इसी फंडिंग एजेंसी के वेबसाइट पे जाओ. उन्होंने एक थर्स्ट एरिया दिया कि ये जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम्स बताए वो थर्स्ट एरिया है, कि हम ये थर्स्ट एरिया पे रिसर्च अगर आप लोग अगर करते हैं तो आपको ये, आपको यानी ये टॉपिक्स पे हम आपको फंड देंगे, है ना. जैसे कि आप अगर आईसीएमआर पे जाओगे तो एक स्पेसिफिक टॉपिक और हाइलाइट्स होता है कि अभी डीएसटी की तरफ से एक अभी रिसर्च प्रपोजल फॉर एप्लीकेशन आया था कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पे आया था, माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की अभी कमी है, एंटीबायोटिक्स, न्यू एंटीबायोटिक सर्चिंग की जरूरत है. वैसे ही आपको रिसर्च टॉपिक ऑलरेडी दिए हुए इन थर्स्ट एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसीज, like that is asthma, cancer, diabetes, malaria, etc. is there. Okay, that is nothing but the find out. अब आपको अगर ये ब्रॉडर एरिया हो गया, उसके बाद में कैंसर है या डायबिटीज है, तो डायबिटीज में अगर जाओगे तो बहुत सारे यानी टाइप के डायबिटीज है, 2 टाइप की डायबिटीज है, उसमें कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ रिसर्च होता है उसके ऊपर है. तो अब कैंसर पे फोकस करते हैं. कैंसर है, कैंसर में से आपको बहुत सारे टाइप के कैंसर है, उसमें से आप शुड फाइंड आउट दैट इज ब्रेस्ट कैंसर. ओके, सो नाउ दैट इज फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस. ओके, सो बेस्ट कैंसर पे आप तक अभी तक रिसर्च जो पॉसिबल हुआ है, वो रिसर्च जो है वो यानी किस प्रकार से हुआ है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च और डिफरेंट अप्रोचेस ऑलरेडी यूज्ड टू ट्रीट द बेस्ट breast cancer only. Okay, so find out the possibilities or challenges in that. So you create the questions in your mind, that is nothing but the with respect to the problem. आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैंसर है, कैंसर में से स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर पे आप, ये आपका प्रॉब्लम हो गया, ब्रेस्ट कैंसर एक आपका प्रॉब्लम हो गया. ये प्रॉब्लम को अगर आप अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको पहले क्वेश्चंस डिजाइन करने पड़ेंगे. ये कैंसर क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द कैंसर्स, कॉज ऑफ द कैंसर्स क्या है, आपको सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. तो ये सॉल्यूशंस अभी कौन से अवेलेबल से, व्हाट आर द सॉल्यूशंस आर अवेलेबल इन मार्केट्स, व्हाट आर द that is novelties, or you can say that the approaches are given in research literatures, that should be find out. Along with that you should be find out the questions. तो वो जो क्वेश्चंस आप डिजाइन करोगे, कॉज क्या है, क्यों करना चाहते हो, अभी तक क्या क्या हुआ है, तो अपन आप क्या कर सकते हो. okay? इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन सिलेक्ट हो रहा है, जैसे कि सोसाइटी कौन सी अफेक्ट हो रही है, ह्यूमन यानी फीमेल हो रही है, फीमेल में कौन सा
स्पेसिफिक रेंज है, एज ऑफ रेंज है, वो एज में ही हो रहा कि क्यों कि अर्ली एज में हो रहा, बाद में हो रहा, कौन से एज में हो रहा है, वो आप सब पॉसिबिलिटीज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वो सोसाइटी को आपको ट्रीट करना है पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। फिर उसके लिए आपको डिजाइनिंग कि आपने अभी जो फाइंड आउट किया है, वट एवर द research is carried out in till days by the different researchers, it should be comes into the review topics, or you can say that research on that. Okay? जो अभी तक जिन्होंने रिसर्च किया है उस पे आपके कौन से अप्रोचेस पे अभी तक किया है वो आप पहले सिलेक्ट कर लो। फिर ये रिसर्च आप पढ़ने के बाद में कुछ ना कुछ आपको लैकुनास मिलेगा कि जो रिसर्चर ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन आप उसमें कर सकते हो, वो रिसर्च में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। और मॉडिफाइड वो रिसर्च करने के बाद में वो यानी फाइंड आउट द गैप्स ऑफ ऑलरेडी रिसर्चर इज कैरिड आउट। ओके, देन you think about that, whatever the methodologies or research is carried out, so how about the outcome of that? Okay, outcome of each and every research up to the safety, efficacy, therapy, and efficient product development. In that way, you should be thinking. For that purpose, gather the evidences. Proper evidence you should be carried out to characterizations, supportive characterizations or supportive interpretation data should be collected. And after interpreting the particular data should be collected, it should be interpret that data, and ultimately you should find out the new things or novelty of your products or novelty of your research into the particular topic of that research. That is nothing but that research is become the your findings. You will become the finding of that particular research is there. जे आपने अभी जो ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद में आपने पहले ब्रॉडर एरिया सिलेक्ट किया, फिर स्मॉल टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक पे है, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपने क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं, उसके क्वेश्चन डिजाइन किए। क्वेश्चन डिजाइन होने के बाद में पर्टिकुलर ये जो टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स आप फार्मुलेशन आप जो डेवलप करने वाले हो, मेथोडोलॉजीज एक प्लेटफॉर्म जो डेवलप करने वाले हो, वो किस पॉपुलेशन के लिए है, स्पेसिफिक सोसाइटीज के लिए, सोसाइटी में कौन से पॉपुलेशन के लिए, सपोज वुमन है तो वुमन के किस एज के लिए है, ये कब होता है, ये कॉस्ट के बेस पे आपको डिजाइन करना पड़ेगा। फिर वो एक पॉसिबल डिजाइन बनेगा। डिजाइन में बाद में जो मेजरमेंट्स होंगे कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या हो सकती है, तो फिर उसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन गैदर करना यानी जो अभी तक जो स्पेसिफिक ब्रेस्ट कैंसर पे जो रिसर्च हुए हैं वो कौन से अप्रोच से हुए वो रिसर्च करें। जो रिसर्च होने के बाद में आपको एक डाटा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि जिन 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 लोगों ने अभी तक रिसर्च किया है उन रिसर्चर्स का आपको एविडेंसेस के साथ में कलेक्ट करना पड़ेगा। जो एक टॉपिक है तो वो टॉपिक आपने जो अभी माइंड मेकअप किया है कि मैं इस पे ये कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, आपने जो माइंड मेकअप पे किया है और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने जो आपकी सॉल्यूशन जो आपके क्वेश्चंस तैयार किए हैं प्रॉब्लम्स, वो अभी तक के लोगों ने जो रिसर्च किया है उन्होंने फाइंड आउट किए हैं आपके द मार्क या नहीं है। तो अगर किए भी होंगे तो वो जो टेक्नोलॉजीज जो प्लेटफॉर्म्स और रिसर्च किया होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ गैप फाइंड आउट करना है। वो जो गैप फाइंड आउट होगा वो आपका रिसर्च का नोवेल्टी होगा और उस बेसिस पे आपको रिसर्च टॉपिक डिजाइन करना है। दैट इज नथिंग बट द basic steps of research projects, or how can you find out the particular title for your research is this. Okay, next slide please. Okay, after that what is scientific method? पहले आपने जो basic research जो already developed है that is nothing but the scientific, or you can say that scientific theories is there. On that basis you should be go for conversion of basic research into the applied research. You should be think in that way, that is in systematic way to collect the data or theoretical approaches and that observations
and experimental approaches should comes into the interpretations, which will be nothing but the and possibility to find out the particular applied based research, and applied based research is converted to translation research or tech transfer. That is nothing but the scientific methods. In that first, empirical evidences. Evidences should be gathered, whatever the experimental or observation should be carried out into your research works. And then after that, that observation experimentals is converted into your relevant concept. That is nothing but the which will be essential for understanding understanding or interpretation of the data, whatever the problem you have find out, and that um, solutions should be find out that problems should be developed one concept, or that is our methodology, or this is my research work, or you can say this is my basic concept or novelty, or you can say that which will be beneficial for the solution is there. That is nothing but the relevant concept is there. In that, though, whatever the concept you have to develop, you should be find out your objectives. That objectives you have already designed on the in your mind while designing the questions. Okay, so that objectives, whether it should be solved, the your objectives through your relevant concept, those you have to develop on your observation and experimental basis in this. Then that objectives, with respect to the consideration of objectives, should be developed the ethical neutralities. That is nothing but that methodologies should be scientifically, you can say that proper and ethical or robust techniques should be developed, or you can say that reproducibility of work, it should be required in that. Okay, and finally, that is prediction based on the probabilities and statistical data. Whatever the research should be carried out during the experimentals and observations, that observation and experimental during the research, which comes into the statistical data through the interpretations, and you should find out, you can say that this systematically collected data or facts, their theoretical treatment, or on the basis of experimental and interpretation data and your observations is proper, and particular method should be developed for the your development of novel research work. Okay, and you have ultimately, you can say that you have given the particular uh, solution for the particular problem is there. Okay, next slide please. Okay, another one, that is what are the qualities of good researchers? Good researcher, अगर अच्छे researcher बनना चाहते हो तो आपके पास में क्या क्या quality चाहिए? First, that is creative thinking. Okay. यानी creative thinking, ये जो मैंने आप अभी बता रहा हूँ, creative thinking, systematic approach, logical reasoning, empirical grouping और replicate results. ये जो अच्छे, अगर आप लोगों में, अगर सब लोग में है, ये ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, या आप सभी लोग रिसर्चर है, आपके आपके फील्ड में, आपके आपके टॉपिक्स में एक अच्छा रिसर्चर हो आप, क्योंकि तभी आप एमफॉर्म किए हो, फैकल्टीज में आए हो, या पीएचडी किए है, ये पोजीशंस पे आए हैं. डेफिनेटली यू आर द गुड रिसर्चर इज देयर. बट whatever I am going to tell you, it's not for the you people, you can say that those who want to do the research in every steps. मेरा एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिसर्च आप किसी भी स्टेज में चालू कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बी फार्म में हूँ, एम फार्म में हूँ, मैं अभी फैकल्टी पोजीशन में हूँ, या प्रिंसिपल पोजीशन में हूँ, या एसोसिएट प्रोफेसर, किसी भी स्टेज लेवल पे रिसर्च चालू करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप में इच्छा शक्ति चाहिए कि मुझे रिसर्च करना है. अभी क्या होता है ना कि मेरी सिचुएशन हो या हर एक की सिचुएशन से, सबकी सिचुएशन सेम समझ लो. अब अगर आप सेटिस्फेक्शन मोड में आ गए, भाई मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है, सब चीज हो रहा है, सब रूटीनली चल रहा है, तो टीचिंग में भी करके भी आप सबसे सही चल रहा है, तो जॉब सिक्योर है, तो रिसर्च करने की क्या जरूरत है ना? तो ये चीजें जो है ना, सब ठीक है, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत है नहीं.
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ना कीड़ा जाग जाता है कि नहीं भाई, मैंने अभी प्रिंसिपल पोजीशन में है, प्रोफेसर बन गया, वो सब चीज है, रिसर्च विसर्च तो अभी जरूरत तो है नहीं, लेकिन अभी मैं मेरे अंडर में एमकॉम के बच्चे हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी तो रिसर्च टॉपिक देना है। तो आप आजकल अगर, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है ना। तो रिसर्च करने के लिए सबसे बड़ी बात आज की कंडीशन से है, आज का जो जनरेशन है, जो आपके पास में जो एमफार्म के स्टूडेंट्स आ रहे हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो रिसर्चर नहीं है, वो एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। आप ये माइंड मेकअप करके चलो कि they are came for completing their degree, they want only degree certificates or MPharm degree or PhD degree, they want only उसको क्या बोलते हैं, कागज चाहिए उसको, है ना। तो वो कागज के बेस पे वो आगे बढ़ेगा, नो डाउट। Degree is a essential document to enter, or you can say that enter into the industry or academic area, or you can start your careers. आपको करियर स्टार्ट करने के लिए आपको एक कागज चाहिए। एक बार आपने अगर करियर स्टार्ट चालू कर दिया, आप किसी में भी एकेडमिक्स या रिसर्च में, तो आपको डिग्री कोई नहीं पूछता है, आपको जॉब जॉब रोल क्या है, आपका जॉब रोल क्या है, और जॉब रोल के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे आपको सैलरी और सब चीजें मिलते जाती है, तो वो रिसर्च हो गया, ठीक है। तो अभी आप ये सोचो कि आपको एमफार्म करना है इसलिए रिसर्च कर रहे हो, या पीएचडी करना है इसलिए रिसर्च के बारे में सोचते हो, या फिर आपके बच्चों के लिए रिसर्च करना है इसके लिए सोचते हो, ठीक है। तो ये अगर करना है, सबसे पहले आपको ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि आपको क्रिएटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। तो क्रिएटिव थिंकिंग आएगी कैसे? आज की तारीख में अगर क्रिएटिव थिंकिंग लानी है, तो आपको सोचना पड़ेगा। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स इज नियरर टू यू, इट्स नॉट वे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू, it's surrounding yourself, have the problems, okay, and that problem you should be solved by different various approaches, and how to solve, to find out the solutions is nothing but the creative thinking, कुछ नहीं है। थोड़ा सा लोग जो सोचते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचो, तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग आ जाएगी। एंड वो जो आपको क्रिएटिव थिंकिंग है, आजकल आजकल आपको अगर वो लाना है, तो एक मैं इजी एंड सिंपल तरीका बताता हूँ, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग आपको, फार्मेसी में आपको न्यू रिसर्च करने के लिए तरीका क्या है? तो बेस्ट है कि आजकल आज की तारीख में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च चलता है, तो फार्मेसी छोड़ के दूसरे रिसर्च टॉपिक पढ़ो, तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग इजीली आ जाएगी। एग्जांपल, आप जो फार्मेसी के आर्टिकल पढ़ते हो, उसकी बजाय आप थोड़ा सा बेसिक रिसर्च के टॉपिक पढ़ो, फिर फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स बेस्ड रिसर्च पढ़ो, मटेरियल बेस्ड रिसर्च पढ़ो, और नैनो मटेरियल रिसर्च पढ़ो, नैनो ड्रग डिलीवरी नहीं। ड्रग डिलीवरी तो हम लोग करते हैं, हेल्थ केयर वाले कर रहे हैं, बराबर है, फार्मेसी फील्ड वाले। तो आप थोड़ा मटेरियल रिसर्च पे जाओ, नैनो मटेरियल पे जाओ, पॉलीमर मॉडिफिकेशन पे जाओ, पॉलीमर रिसर्च पे जाओ। आप ये टॉपिक पे के आर्टिकल्स पढ़ो, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। और रिसर्च आर्टिकल पढ़ते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो मटेरियल्स है, ये जो रिसर्च आपको डेवलप हो रहा है, तो वो रिसर्च जो आप करना चाहते हो, वो आपको हेल्थ केयर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में यार, या फार्मेसी फील्ड में आपको यूज करना है ड्रग डिलीवरी, बस ये थिंकिंग लेके आपको पढ़ो। तो वो टॉपिक जो है, आपको वो रिसर्च, बेसिक जो रिसर्च हो रहा है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट, यानी बीएससी एमएससी में जो रिसर्च हो रहा है, वो रिसर्च को आपको फार्मेसी फील्ड में लाना है। तो दैट इज नथिंग बट द क्रिएटिव थिंकिंग। आप में नहीं है तो वहां जाओ, वहां से ढूंढो और इधर आओ, तो आपको जो वो टॉपिक्स है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। फिर वो जो टॉपिक आप लेके आ रहे हो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च फील्ड से, दैट टॉपिक, इट शुड बी to develop one approach, and develop one approach, and that approach systematically should be plan it,
into the our research work or our drug delivery research. And for that purpose you should create the logical reasoning कि ये जो मैंने रिसर्च मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से लाया है, यानी बेसिक बीएससी केमिस्ट्री बेसिक रिसर्च से मैंने लाया है, वो पॉसिबल है क्या? उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग क्रिएट कर। लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज, फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज इन आवर रिसर्च वर्क शुड बी इन दैट। देन एम्पिरिकल एक उसका एक ग्राउंड डेवलप करो कि हो सकता है, एक प्लान करो, डिजाइनिंग करो कि एक परफेक्ट प्लानिंग। कोई भी अगर रिसर्च अगर अच्छा करना है ना, तो उसका आपको पहले प्लान ऑफ वर्क अच्छा होना चाहिए। अगर प्लान ऑफ वर्क अगर अगर आपका अच्छा है, नो डाउट प्लान ऑफ वर्क डिजाइन करने के लिए आप टाइम लो, 6 महीने 1 साल तो आपको रिसर्च डिजाइन करने के लिए और प्लान ऑफ वर्क डिजाइन करने के लिए टाइम ले। अगर 3 साल की पीएचडी कर रहे हो, या 3 साल की अगर पीएचडी का एग्जांपल ले रहे, 3 साल की अगर पीएचडी कर रहे हो, उसमें 1 साल तो आप प्लान ऑफ वर्क डिजाइन करने के लिए ले लो कि आपको कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है, अगर टॉपिक हो ज्यादा मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करना है, नोवेल्टीज उन पे कौन सी चाहिए, एक्सिपिएंट मॉडिफाई करना है, कौन सा मटेरियल चेंज करना है। वो एक ग्राउंड डेवलप करने के बाद में सब चीज एक साथ ले आओ, ये पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं, ये सब करने के बाद में ये आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये अगर प्लानिंग आपकी अगर परफेक्ट हो, तो वो रिसर्च तो 2 महीने में आपका पीएचडी का टॉपिक भी रिसर्च और खत्म हो जाता है, रिसर्च करके फ्री हो जाते हैं। एक यानी 6 महीने आप ऐसे समझ लो, 1 साल आप अगर प्लानिंग के लिए लगा दिए, और लेकिन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए परफेक्ट कि आपको कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी, कौन सा एक्सिपिएंट कहाँ से मिलेगा, एक्सिपिएंट से लेके मेथोडोलॉजी से लेके टेक्निक से लेके बीकर से लेके जो आपको चाहिए वो चीज आपकी टेबल पे लाने तक का रिसर्च जो प्लान ऑफ वर्क है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। ऐसे समझ लो आपके पास सब चीज अगर आ गई प्लान ऑफ टेबल पे, तो रिसर्च तो आपको फिर टेबल पे काम करने के लिए खाली 2 या 3 महीने बहुत हो जाते हैं। 2 या 3 महीने में आपने अगर प्लान कर ली, 2 या 3 में रिसर्च कर लिया, उसी के आपको कैरेक्टराइजेशन करने, कैरेक्टराइजेशन बेसिस में आपको जो कैरेक्टराइजेशन आते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस लगते हैं, वो बेस पे आप मेथोडोलॉजी चेंज करो, प्रोडक्ट में चेंजेस कर लो, तो आपको फाइंड आउट सॉल्यूशन जो है इजीली मिल जाएगा। और वो जो आपने डेवलप किया है उसको ऑप्टिमाइज कर लो, दैट इज नथिंग रिप्लिकेबल रिजल्ट्स। वो मॉडिफिकेशंस जो आपने किए हैं, एक ऑप्टिमाइज प्रोसीजर्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने जो रिसर्च किया हुआ है, जो प्रोसीजर डेवलप किए आपने, अगर और दूसरे बच्चों को दिए, तो वो बच्चों में रिजल्ट्स आना चाहिए। भला है वो रिसर्च आर्टिकल में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपका जो एमफार्म का स्टूडेंट्स है, आप दूसरे बच्चे को एमफार्म के स्टूडेंट्स में अगर वो दे रहे, उसमें वो प्रोसीजर डेवलप होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए, रिजल्ट सेम आने चाहिए। That is nothing but a replicable results. Okay. Next, please. So that qualities should be developed in your researcher works. If you want to become a researcher, good researchers, that quality should be in your minds. Okay, develop it yourself. Another criteria for the good researchers. आपको अच्छा रिसर्चर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? आपके अंदर में एक दैट इज 8 क्राइटेरियाज होने चाहिए। वो आपको अगर नहीं है तो डेवलप कर लो, कर सकते हो, वो इजी एंड सिंपल जो मैंने अभी बताई है वही है, एक नजरिया अलग है बस एक्सप्लेन करने का। वो दैट इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट डिफाइन पर्पस। आपको जो रिसर्च करना है वो क्लियर होना चाहिए कि क्लैरिटी इन योर आउटलाइन, वो क्यों करना चाहते हैं, पर्पस क्या है, और उसमें ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर लो, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर लो। तो वो ऑब्जेक्टिव्स प्लान करना यानी ये एक तरह का आपका कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, क्राइटेरिया है गुड रिसर्चर बनने के लिए। देन दैट इज डिटेल प्रोसेस। जो भी आपने रिसर्च पर्पस डिजाइन किया है उसके लिए मेथोडोलॉजीज आप कंप्रेसिव लिटरेचर करो, लिटरेचर के बेस पे आप मेथोडोलॉजी डेवलप करो, मेथोडोलॉजी डेवलप करने के बाद में प्लान डिजाइन करो। वो जो प्लान होना चाहिए वो रोबस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक स्मॉल स्मॉल थिंग्स डिजाइन, एक सोचना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए आपको कि करना क्या क्या है।
Okay, everything you should be covered from where you should be get the drug sample, where you should be get the from excipient sample, where you should be get the beakers and glasswares is there. Where after that collecting that you should be clear that which methodology should be use, what are the possibilities in modifications in methodologies, then where you want to characterize this characterization, do the characterizations. After that characterizations, how many time should be required to characterize each and every characterize. Nowadays characterizing is very easy. आप अगर ये सोचते होंगे कि आपके पास में बहुत सारे लोग तो रिसर्च इसलिए नहीं करते कि एक बहाना होता है, मेरे कॉलेज में ये फैसिलिटीज नहीं है, मेरे कॉलेज में वो फैसिलिटीज नहीं है, ये कॉलेज में वो है, वो कॉलेज में वो है। ये सब चीजें छोड़ो, ये एक बहाने। उससे सब एक वे, फाइंड आउट द वे हाउ दैट आर द प्रॉब्लम्स, यू कैन से दैट हर्डल्स इन योर रिसर्च। ये प्रॉब्लम समझ लो या हर्डल समझ लो रिसर्च करने के लिए। तो ये तरीके है, तो ये challenges है समझ लो, these are the challenges. So overcome the challenges. How can you overcome that challenges? By collaborating with the respective institutes or that is any research institutes who have their facilities. आप research कर लो, वो रिसर्च जो है वो आप दूसरी जगह कोलैबोरेशन कर लो, वो कोलैबोरेशन करने के बाद में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज भी अपन जितने लोग एमफार्म कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, वो कॉलेज में फैसिलिटी पूरी होती नहीं, कैरेक्टराइजेशन की फैसिलिटी किसी के पास पूरी नहीं होती है। किसी के पास यूवी है तो जीटासाइजर नहीं है, किसी के पास जीटासाइजर है तो एफटीआर नहीं है, एफटीआर है तो डीएससी नहीं है, डीएससी नहीं है तो एक्सआरडी नहीं है, एक्सआरडी नहीं है सेम नहीं है, सेम नहीं तो टेम नहीं। हर एक के पास में कोई परफेक्ट आदमी नहीं है। जैसे अपन खुद पर्सन परफेक्ट नहीं है तो कोई इंस्टीट्यूट कैसे परफेक्ट हो सकता? तो वो अपन कैरेक्टरिस्टिक बाहर से कर ही लेते हैं, एनएमआर है वहां से सबसे, तो वैसे सॉल्यूशंस भी हो सकता है। आपके पास में आइडिया है, ये बहुत हो गया, तो रिसर्च तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, देन इट शुड बी अप्लाइड द इथिक्स, ensure ethical standards or maintain through your projects. आपने जो भी रिसर्च करना है उसमें आपको इथिक्स फॉलो करने हैं, जो भी मेथोडोलॉजी यूज करनी है उसके लिए जो पॉलिसीज फ्रेम आउट किया है, जो गाइडलाइंस किए होंगे वो आपको फॉलो करने हैं, ये ध्यान रखो। दैट इज नथिंग बट अप्लाई ethics is there. Then reveal the limitations, whatever you have planned, find out that what are the limitations. It should become possibility, or you can say that challenges comes in your research is there. You should be find out, and if it is not in your hand, so collaborations and acknowledge them time to time. That is the best way to solve the problems. Then analyze adequately. That is nothing we conduct through the data analysis. Whatever the research should be carried out into the different characteristics, you should be analyze this. And after the analyze, you should be find out your comes to your findings. Then after findings, communicate the results are clearly effectively. That means that is nothing but the publications of patent and research works in good and scientific evidence should be created. And after that, justify the conclusions, provide strong evidence to support the conclusions. That is, how can you justify it there? By publishing the good journal or research publications, and the patent is there. So through that, you can achieving the good quality of research. Okay, next slide, please. Next slide, please. Okay. And a research report should be generally included. Okay, this is nothing but the research report structure. ये कोई research report structure नहीं है। मैंने एक जो आपके thesis में जो title रहते हैं वो title को different तरीके से बताया है, ये ही रहते हैं। जैसे कि statement of problems. Statement of problem is nothing but the research invoice or need of your research. That is nothing but the statement of problem you called as. आप एमफॉर्म थेसिस में या पीएचडी थेसिस में रैशनल ऑफ योर रिसर्च वर्क लिखते हो या नीड ऑफ योर रिसर्च वर्क लिखते हो, लेकिन सेम थिंग आप जब कोई
रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो जाता है सेम एंड सिमिलरिटी ऑफ दैट ओके इन दैट आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चंस okay then that nothing but review of literatures existing research works then hypothesis or objectives is there formulating the research goals on the basis of your possible hypothesis or possible solutions that is nothing but the hypothesis then create the to complete that hypothesis to create small questions is nothing but the objectives to you can solve that objectives solve that problems is nothing but the objectives is there okay then research design nothing but the planning for the study or methodologies then selection of variables that is nothing but the choosing key study elements is nothing but you can say that which drug you are going to use for studies, which excipients you are going to studies use during that study, methodologies, then materials you are going to use for that your research work. That is nothing but the selection of variables or sources is there. Sources should be collect the drug, excipients, and methodologies, etc. is there. Okay. Then sample selection. Sample selection is nothing but the experimental work. And during the experimental work, you should be carried out the different characteristics. And that characteristics is nothing but on that basis, you should be modified the different experimental procedures is there. Okay, on that basis of different characteristics. Then after that, characterization should be collect the data. That is nothing but the data collections or gathering research data is there. Nothing but the research results and the discussion part is there. Okay. Then data presentations means summarization of the data, or you can say that conclusion of your whole research work with respect to the statement of your problems. Okay, whatever you have planned for the need of your research works, or you can say that statement of problems or rationale of your research work. With respect to that, conclude your summary or conclude your result and discussion. That is nothing but the that is conclusions. Then bibliography is there. Okay. Bibliography that is nothing but the reference citations. You can say. Okay. Next slide, please. एक presentation झाल्यावर येतोय हा FDP हा okay case study you can say that it is it's case study कि मैंने एक रिसर्च टॉपिक डिजाइन किया था स्पेसिफिकली फॉर कैंसर्स ओके कैंसर में रिसर्च करना है तो मैंने इसलिए किया ब्रेस्ट कैंसर्स में अगर बहुत सारा मैंने रिसर्च किया ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट किए फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो डिजाइन किया फिर वो डिजाइन करने के लिए एक फाइनली टॉपिक मैंने डिजाइन करने के पहले स्टेट ऑफ प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स क्या था the problem with existing or conventional drug delivery system for cancer therapy is lack of tumor specificity or you can say that damage to non-neoplastic or non-cancer cells, low drug loading efficiency, absence of imaging capabilities to observe the movement of drug after administrations. Then these drawbacks of conventional drug delivery systems which will decrease the efficiency of therapy as well as increase the cost of therapy. So another one that is in addition to this, the existing drug delivery systems attack on tumor cell via single cell mechanisms which leads to the development of drug resistance, focusing on consumer to option the combination therapies there. Okay. So that is the main objectives is another one. Another problem in delivering of the conventional drug delivery into the tumor is there, which will create the highly viscous microenvironment of tumors and which leads to non-uniform vascularization, which to limits
the distribution of chemotherapeutic agents uniformity. This entire problem can be solved with the extent which using this existing approach can be with novel approach, that is synthesize of amine functionalized cellulose based magnetic nanofiber composite, that is magnetic nanofiber composites capped with graphene quantum dots for thernostic application in breast cancers. अगर आपको सिंपल और इजीएस्ट वे में अगर आपको बताया जाए तो बेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में आपको बहुत सारे ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस अगर सॉल्व करने हैं तो कैसे सॉल्व करो। तो मैंने एक सोचा कि अब क्यों ना एक नैनो फाइबर कंपोजिट्स बनाते हैं। जो नैनो फाइबर क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जो मटेरियल यूज कर रहे हैं नैनो फाइबर्स वो एक फाइबरस मटेरियल है। फाइबरस मटेरियल होने की वजह से उसकी ड्रग लोडिंग कैपेसिटी अच्छी है। ड्रग लोडिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से अपन उसमें डिफरेंट फंक्शनलाइजेशन कर सकते इसलिए ये मटेरियल नैनो फाइबर चूज किया। फिर अगर नैनो फाइबर में अगर यूज करना है तो और एक सोचा कि उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या, और एक मैग्नेटिक भी यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक कैन बी यूज फॉर द थर्नोस्टिक अप्रोच एप्लीकेशन। थर्नोस्टिक एप्लीकेशंस क्या है कि आजकल जो रिसर्च जो कैंसर में आ रहे हैं वो सिंगल ड्रग डिलीवरी यानी ट्रीटमेंट बेस है। तो वो ट्रीटमेंट बेस्ड रिसर्च ही है, तो डायग्नोसिस नहीं है। तो अपन ये सोच रहे हैं कि जो डिलीवरी इन कैंसर इज वन वे, सो वी हैव टू अप्लाई टू अप्रोचेस, दैट इज डायग्नोसिस अलोंग विद एडी ट्रीटमेंट। हम एक ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाए जिसमें ड्रग डिलीवरी भी हो यानी ट्रीटमेंट भी हो और डायग्नोसिस भी हो। इसलिए हमने मैग्नेटिक नैनोफाइबर कंपोजिट्स और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी चाहिए, इसलिए हमने एक नया सेंसिबल मटेरियल यूज किया जो ग्राफीन क्वांटम डॉट्स। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है जिसमें मैग्नेट फाइबर लिए, फाइबर को मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज फाइबर हो गया है मैग्नेटिक फाइबर नैनो कंपोजिट्स, उसको फिर ग्राफीन क्वांटम डॉट्स ने कैपिंग किए। अब फिर वो ड्रग डिलीवरी ब्रेस्ट कैंसर्स में यूज किए। अब ब्रेस्ट कैंसर में जब यूज होता है तो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथर्मिया लोकल हाइपरथर्मिया जनरेट करना पड़ेगा। हमने सोचा कि जो मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम से जब आपने ये मटेरियल्स मैग्नेटिक नैनो फाइबर कंपोजिट्स विद ग्राफीन क्वांटम डॉट्स जब इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद में जो पूरे नैनो पार्टिकल्स नैनो साइज में ये पूरे नैनो पार्टिकल्स जो है अपने पूरे बॉडी में जब सर्कुलेट्स होंगे तो एक अकुमुलेशन करने, तो अकुमुलेशन करने के बाद में अपना टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या है, ब्रेस्ट है। तो ब्रेस्ट कैंसर पे अगर अल्टरनेटिव अपोजिट्स यानी ऊपर से अगर अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फोर्स अगर अपन ने अगर अप्लाई किया तो बॉडी में जितने भी नैनो पार्टिकल्स मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स है वो एक जगह पे आ जाए। एक जगह पे आने की वजह से क्या होगा, एक यहाँ पे लोकल हाइपोथर्मिया जनरेट हो जाएगा। हाइपोथर्मिया यानी बॉडी टेम्परेचर से आपकी बॉडी स्पेसिफिकली ब्रेस्ट में जो उसका टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। 3 से यानी 5 डिग्री यानी 37 डिग्री टेम्परेचर से 41 टू 42 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा ओनली ब्रेस्ट का, ना कि आपके होल बॉडी का। बॉडी का टेम्परेचर आपका 37 रहेगा लेकिन ब्रेस्ट का कैंसर रहेगा, ब्रेस्ट का जो टेम्परेचर रहेगा कैंसरस ब्रेस्ट का वो 42 टू 43 डिग्री टेम्परेचर। तो 42 टू 43 डिग्री टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू किलिंग ऑफ कैंसर सेल्स। जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो कैंसर सेल से कैंसर का जो सेल्स है वो इनिबिशन होगा। कैंसर सेल इनिबिशन होने के बाद में जो उसका दैट इज अपोप्टोसिस ऑफ सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें टारगेटिंग किस चीज की वजह से हुई है, जो अपने यहाँ पे जो ग्राफीन क्वांटम डॉट्स है, ग्राफीन क्वांटम डॉट्स हैव द एबिलिटी टू टारगेटेड find out the cancer cells and target it into the
cancer cell, not to bind with any other normal cells, only by. So that is the targeting is possible. After that targeting, apply the hypothermia, so it is will be possible. Then after that, release the drug into the viscous environment, and that viscous environment should be that is uniform drug distribution into the breast cancers. Because of that, we are applying the magnetic alternative magnetic force. Only drug is targeted into the breast cancer is there. Okay. Okay, that is ultimately how we have to develop that. The here we should be prepare the amine functionalized magnetic nanofibers, then creation of ADC NHS amide couplings, then COH should be generated acidic, then this binding will be graphene quantum dot, and finally a drug should be loaded, and here that is drug loaded cellulose based magnetic nanofiber composites capped with graphene quantum dots for theranostic application in breast cancer is there. Okay. Next slide, please. Hello. Okay. In that novelties I have told you. Next slide, please. Okay. Finally, this research projects I have applied for nanomissions which have the for 48 lakh rupees grant. Then deliver the presentations at IIT Delhi for these presentations. So many questions asked me regarding this delivering the presentation on that topics. So this is first time I have delivering these presentations in front of IIT directors, and some juries will come from the different corners of India. इसमें मुझे ये पता चला कि ये मेरा टॉपिक क्यों रिजेक्ट हुआ। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने सारे जवाब सही तरह से दिए, उनको भी वो टॉपिक पसंद आया, उन्होंने मेरे साथ में आर्गुमेंट किया कि ये टॉपिक आपको अच्छा है, आप रिसर्च कर सकते हो इसमें ऊपर टॉपिक्स और सब चीजें। फिर एक बात आई कि ये रिजेक्शन क्यों हुआ। आप ये सोचेंगे ये रिजेक्शन क्यों, मैंने जैसे बताया कि रिजेक्ट हुआ है ना। रिजेक्शन इसलिए हुआ, मुझे उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा कि ये जो आपने जो रिसर्च किया, ये अरे थेरोटिकल बेस पे ये बहुत अच्छा टॉपिक्स है कि आपने ये रिसर्च सिलेक्ट किया और ये पॉसिबल भी है, एक्सपेरिमेंटल भी है, लेकिन आपके पास में क्या ऐसी फैसिलिटीज है कि आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो। तो एक्चुअल में मेरे कॉलेज में फैसिलिटी वो क्लिनिकल ट्रायल की नहीं है, लेकिन इथिकल लैब इथिकल कमेटी का परमिशंस और जो अपन क्या बोलते हैं अपन फार्माकोलॉजी लैब है और एनिमल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है अपने पास में, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के लिए नहीं था। तो मेरे पास में एक ऑप्शन था कि मेरे कॉलेज का कोलैबोरेशन, यानी हमारे यहाँ पे जो एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और नगर पालिका का जो इंस्टीट्यूट है, मैंने अगर ये जवाब दिया होता कि हमारे कॉलेज का कोलैबोरेशन यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो रिसर्च सेंटर है, यहाँ का जो हॉस्पिटल उनके साथ में अगर कोलैबोरेशन है करके अगर बताया होता तो ये मुझे वो प्रोजेक्ट मिल सकता था। ओके, नो डाउट मैंने ये फिर यही टॉपिक अच्छा किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्रेजेंटेशन से। मैंने ये आरपीएस में अप्लाई किया, एआईसीटी में रिसर्च प्रमोशन स्कीम में, फिर ये टॉपिक मुझे इससे 22 लाख रुपीस की रिसर्च फंडिंग मिली। फिर मैंने रिसर्च फंडिंग के साथ में फिर मैंने ये नॉवेल्टी थी इसलिए पब्लिकेशन पहले किया नहीं, फिर मैंने इसके ऊपर पेटेंट अप्लाई किया, पेटेंट पब्लिश हुआ, फिर 2 साल लगे उसको, एक साल लगा कंप्लीटली अप टू द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रांट ऑफ पब्लिकेशंस इन जो ये मेथोडोलॉजी टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है वो टेक्नोलॉजी डेवलप पे एक पेटेंट ग्रांट किया, पब्लिश के पास मैंने पेटेंट ग्रांट किया, प्रोसेस पेटेंट नॉट डिजाइन पेटेंट। फिर पॉसिबल पब्लिकेशंस ऑन सिमिलर टॉपिक्स, नैनो स्केल्स में आरएससी का पब्लिकेशंस है, 5.8 इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशंस किया last year's published in January 2025. Then another publication which comes into the curcumin loaded magnetic cellulose fiber nanocomposite capped with concavalin A
that is for therapeutic application in breast cancer. Cellulose Springer का जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर 4.8 है. फिर अभी एक पब्लिकेशंस अप्लाई किया है, दैट इज स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव ग्राफीन क्वांटम डॉट्स कैप amine modified wheat cellulose magnetic fiber composites for targeted curcumin delivery in breast cancers. ये अभी अंडर रिव्यू लिखा है, लेकिन अभी एक्सेप्टेड हो गया है. ये भी सेलुलोज में 4.8 में. These are the achievements of my research work in particular case studies is there. Next slide, please. Next slide. Okay, and ये जो टॉपिक चूज किया है, this is on socio economical benefits. This is the government, central government policy है आज की तारीख में कि ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए आपके रिसर्च में. Okay, breakthrough in nanomedicine ensure safety, efficacy and sustainable healthcare solutions आपको अगर देना है तो जो जिस ट्रीटमेंट बेस पे और एरिया पे आप काम कर रहे हो उसमें एडवांसमेंट इन कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट चाहिए. देन बायो इमेजिंग है, हम जहाँ ट्रीटमेंट कर रहे वहां पे ग्राफीन क्वांटम डॉट से हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो पेशेंट्स हैं वो आपको पता है एमआरआई स्कैनिंग सीटी स्कैन बार बार करना पड़ता है पेशेंट्स में, तो एडिशनली डिलीवरी करनी पड़ती है एजेंट्स की. तो जो आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो ग्राफीन क्वांटम डॉट था वो खुद इटसेल्फ फ्लोरोसेंस जनरेट करता है, ग्रीन डॉट प्रोड्यूस करता है. तो आपको ये पता चल जाता है कि कितने कैंसर सेल बचे हैं, कितने कैंसर सेल्स कम हुए. तो रियल टाइम डायग्नोसिस इज आल्सो पॉसिबल थ्रू द ग्राफीन क्वांटम डॉट्स इज देयर. तो जो आपने किया है वो रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल होना चाहिए, and dual treatment approach which will be given in that solutions. So it is a breakthrough in sustainable healthcare solution. Next. जो भी आप रिसर्च कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ में वो कोरिलेट करना चाहिए. So I would like to thanks the acknowledgement for RPS AICT for funding the research projects of 22 lakh rupees. Now, finally, I would like to thanks management, principal, and specifically postgraduate student. I am not doing the table work or research works. I am giving the creative thinking or mindings to that is given the topic only, or they will do the research. My especially credit goes to my AmFarm research students who have worked their qualities of works. And management and principal of my institutes, HR Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research, Shirpur, Dhule, Maharashtra. And I have to achieve these achievements to collaborate with different industry, or you can say that different departments. That is Department of Science, Hemchandracharya North, Gujarat University, Patan, Gujarat. Then Department of Biological Science and Engineering, IIT, Gandhinagar, Gujarat, and Department of Pharmaceutical Chemistry, Arvind Gowdy College of Pharmacy, Satara, Maharashtra. Next. Finally, thank you for your attentions. And if anyone have the questions, you can ask the questions on your topic, today's topics. अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि Anybody having any questions for our eminent Unmute. speaker, sir? They can please unmute ask. करो और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. You can unmute yourself and you can ask the questions to our speaker, sir. होप कि थोड़ा सा मैंने आपको बहुत कुछ ज्ञान तो दिया नहीं है, लेकिन सम एक्सटेंट आपका थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज रिसर्च फाइंडिंग में, आप रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन में आपको कुछ बेनिफिट्स मिले या फिर रिसर्च करने में आपको बेनिफिट्स मिले.
Okay, thank you, sir. Thank you very much. It was very fruitful and a very important suggestions. The session was quite well. And since as we came to the end of our today's sessions, day one of 5-day faculty development program, we hope today's sessions prove to be an rewarding experience for each one of us. Thank you. Now I would like to call Professor Dr. Laganit Mahapatra sir to give vote of thanks to our eminent speaker, Dr. Vivekanand Kishan Jatap sir. Thank you, sir. Thank you very much. Have a great day, sir. Thank you, dear all. Thank you, participants. So good afternoon, everyone. I'm Dr. Lagnajit Mahapatra, Professor, Haldia Institute of Pharmacy. It is my privilege and honor to deliver the vote of thanks on behalf of Haldia Institute of Pharmacy at the conclusion of day one faculty development program. I extend our heartfelt gratitude to our speaker, Dr. Vivekanand Kishan Chattock sir, Professor and Head Department of Pharmaceutics, HR Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research, and for this valuable time from his schedule to grace the occasion. And your insightful session inspired us and enlightened us, and we are grateful for the depth of the knowledge you shared with us. And a sincere thanks to our principal and management member of our institute for the support and encouragement for the made this FDP day one successful. And I'm thankful to organizing committee and coordinators from our institute for their meticulous planning and efforts to make this event successful. And finally, I extend my special thanks to all the participants who actively engaged, and your involvement were key for the success of this program. And let us carry forward the knowledge and experience again during this session and continue to grow as an educator and researcher. And finally, thank you once again and have a grateful. And thank you, sir, for your valuable speech and knowledge shared with us about the research and how to select the research topic. Thank you very much, sir. Thank you, sir.